नमस्कारः। स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषाम् अस्मिन् संस्कृतवार्ता प्रसारणे। अहमस्मि ऋषिराज पाठकः। सम्प्रति अद्यतनवार्ताः। भारतदेशे मत्स्यजीविनोः हत्यायाः आरोपेण आरोपितयोः नाविकयोः प्रकरणे इटलीदेशेन रोमनगरे स्थितः भारतस्य राजदूतः श्री देवव्रतः विदेशमन्त्रालये समाकारितः। इतः पूर्वं कोल्लम नगरस्य एकेन स्थानीयन्यायालयेन केरलराज्यस्य तटीयक्षेत्रे भारतस्य मत्स्यजीविनोः कथिते हत्याप्रसंगे इटलीदेशस्य नाविकयोः प्रत्याभूतियाचिका निरस्तीकृता। तमिलनाडु मुख्यमन्त्रिणा जयललिता महाभागया पत्रं लिखित्वा प्रधानमन्त्री कावेरी जलविवाद विषये हस्तक्षेपं विधातुं समध्यर्थितः। तया कर्णाटक प्रशासनं समाक्षिप्तं यत् तद्धि अस्य शताब्दस्य सप्तमे वर्षे प्राधिकरणेन प्रदत्तम् अन्तरिमादेशम् अनुसृत्य तमिलनाडोः कृते कावेरी नद्यां जलप्रवाहं सुनिश्चेतुम् असफलं संवृत्तम्। अपरतः कर्णाटक जलसंसाधन मंत्री श्री बसवराज बोम्मई बंगलूरु नगरे वार्ताहरान् व्यज्ञापयत् यत् कावेरी जलप्राधिकरणस्य सम्मेलनं न कथंकारमपि आवश्यकमस्ति, यतो हि कर्णाटक प्रशासनेन विगतेषु 4 वर्षेषु समधिकं जलमेव मोचितम्। नागरोड्डयन मंत्री श्री अजित सिंह एयर इंडिया विमान समवायस्य कर्मविरामम् अनुपालयतः चालकान् पुनरेकदा कार्यं पुनरारब्धुम् अध्यार्थयत्। लखनऊ नगरे चौधरी चरण सिंह विमानपत्तने नूतन विमानोड्डयन परिसरं समुद्घाटयन् असौ अवादीत् यद् विमानचालकानां कर्मविरामः अवैधो वर्तते। यात्रिणां सौविध्यं समालक्ष्य तैः कर्मविरामः समापनीयः इति मन्त्रिणा प्रतिपादितम्। एयर इंडिया विमान समवायस्य विमानचालकानां कर्मविरामः गतदिने 12 दिवसे प्रविष्टः। विमान समवाययोः विलय विषये नागरोड्डयन मन्त्रालये समर्पितं न्यायमूर्ति धर्माधिकारिणः प्रतिवेदनं मासद्वयावधौ प्रवर्तयितुं नागरोड्डयन मन्त्री श्री अजित सिंह समाश्वासयत्। एतत् प्रतिवेदनानुरूपम् एयर इंडिया इंडियन एयरलाइन्स समवाययोः विमानचालकाः देशाभ्यन्तरे देशाद् बहिश्च द्विविधोड्डयनार्थं प्रेषयिष्यन्ते। पश्चिम बंगाल राज्ये ममता बनर्जी महोदयायाः आध्यक्ष्ये तृणमूल कांग्रेस प्रशासनेन स्वीय कार्यकालस्य 1 वर्षं पूर्णतां नीतम्। प्रायेण 34 वर्षाणि यावत् शासनाधिकारं सन्दधत् वामपन्थी प्रशासनं तृणमूलदलेन गते वर्षे प्रचण्ड बहुमतेन पराजितमासीत्। अमेरिका राष्ट्रपतिना बराक ओबामा महाभागेन निगदितं यद् यूरोप महाद्वीपस्य आर्थिक संकटस्य समाधानं परमावश्यकमस्ति। असौ कैंप डेविड नगरे G8 इति संघटनस्य शिखर सम्मेलनं संबोधयति स्म। शिखर सम्मेलनानन्तरं प्रसारिते वक्तव्ये प्रोक्तं यत् संघटनस्य सदस्य देशाः स्वीयार्थव्यवस्थाम् उपचेतुं वित्तीय संकटं च समाधातुं सर्वान् सम्भाव्योपायान् अनुष्ठास्यन्ति। इंडियन प्रीमियर लीग स्पर्धा मालिकायां ह्यः दिल्ली डेयर डेविल्स दलेन किंग्स 11 पंजाब दलं स्वीय 6 क्रीडक सुरक्षापूर्वकं पराजितम्। एतत् पराजयानन्तरं किंग्स 11 पंजाब दलं प्ले ऑफ स्पर्धातः बहिर्भूतम्। दिल्ली डेयर डेविल्स दलं विजयार्थं निर्धारितान् धावनाङ्कान् 19 कन्दुकक्षेपचक्रे आर्जयत्। अपरतः पुणे नगरे ह्यस्तनस्पर्धायां कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन पुणे वारियर्स दलं 34 धावनाङ्कैः पराजितम्। सौरव गाङ्गुलेः आध्यक्ष्ये पुणे वारियर्स दलेन अविच्छिन्नतया 9 संख्याकासु स्पर्धासु पराजयम् अनुभूय IPL स्पर्धामालिकायां पराजयस्य नूतनं कीर्तिमानं रचितम्। अनेन सहैव सम्पन्नतामाप्नोति संस्कृतवार्ता प्रसारणमेतत्। श्वः नूतनाः वार्ताः समुपादाय पुनरागमिष्यामः। भवेत् तावत् शुभं मङ्गलम्।